So now, so can you tell me what is the change in the problem? What is the change? Trapezium. Yes. Uniformly varying load. Now we have a uniform varying load. Okay, so how can we solve this one? This is a trapezoidal load. So do we have any formula for trapezoidal load? Yes, do we have any formula? We will convert into a triangle and rectangle. Very good, Rahul. Recurring is sir, UDL or UDL and UVL. Okay, huh. Then now we will have UDL as well as UVL. Barabar? Yes, sir. Okay. So now in next 2 minutes, all of you scribble this on your paper. UDL, make it UDL, UVL, and give me the values of VA and VB. Let's see how many can give. Okay, and by that time I'll name 4 to 5 people. I want to hear answers from them. So those who are quite sleeping, I'm not saying you're sleeping, I'm just randomly guessing. जिसका चिट्ठी आएगा वो आएगा नाम. Okay. MacB 45 Nandita Vishwakarma, are you there? If you're there, just give me the values of VA, VB. Then MacB 56 Yesha, you need to give me the value. Make A Sudhiti Guperkar needs to give the value. Acha, Sudhiti was the last one, right? When I asked you about your calci. So have you managed your calculator? No, I wasn't the one. Acha, you wasn't the one. Sorry then. So you have a calci, right? So calculate it. Okay, so one more. Ankit from SEB, Ankit Soni. Okay, so these are the people who will give me the answer VA, VB. We will verify among yourself. Okay, and by the time other things can also answer. Give me the private chat box. So quickly, by that time I'll take a sip of water. I hope everybody knows that you have been quite regularly doing in engineering mechanics. You must have done, sorry. I'm getting some answers. Let me check. Raj Purohit, Yesha. But you can download some scientific calculator on Android app. Yes, Yesha? You haven't downloaded it. Those who don't have calculator, download it from an Android Play Store. We have the app there. You can use that app. Okay, fine. Okay, good. Isha is doing that. Ayush Agarwal and Mayank, you have calculated UDL, UVL. That is fine. Give me the values of VA and VB. That is support reactions. Even the Rajpurohit. So I am skipping first 2 mark of problems. Okay, in SFD and BMD, there are only 1 or 2 marks left given for your support reactions, which you were calculating in engineering mechanics. If the same problem came, then it may be for 6 marks or 7 marks. But here that is condensed to only 2 marks. But if you go wrong in those 2 marks, your SFD BMD will be wrong. Yeah.
rectangle. Okay. Okay. So by that time you give the answer, let me keep the things ready for SFDBMD. Okay, Sania has answered. So I have one set of answers. Very good, Sania. Pretty quick. Now let's see somebody else can answer or not. Okay, so Sania and Love both have given the correct answers. So let's go with them. Oh, just now I have some another set of answers. Tejas and Tejas, just check whether you have answers are correct. Only A and B is mistake. Okay, let me write down and we'll understand. By default, as the loading is more at point B, the reaction suppose B पे ज़्यादा आएगा, A पे कम आएगा. So A must be 26.67 as per most of them, most of you, and the B must be 63.33, right? Am I correct? So 33.25, I guess. Oh, I'm now I have very so many different answers. So what to go about? Now you tell me which are correct one. Now I have 2-3 people saying 26.67 and 33. Sorry, 63 नहीं. अच्छा 33 वाला भी है, 63 वाला भी है. Now what to go? कैसे करेंगे? Should I write 33? VA plus VB should be 60. Yes, so of course. 33 VA plus will be 33 right. होगा. It cannot be 63. Not more than the applied loading. But somebody are getting some other answers as well. Yeah, Harsh Gore also got. सर आप ही एक बार कैलकुलेट कर लो. Equal to 27.8 and VB equal to 33.2. Yeah, this is more, seems to be more correct. So let's go about this way. Okay, I don't want to calculate. That is why I'm asking you to do. Okay, because I don't know how to calculate, na. So तुमको ही आना चाहिए. So let's see. As per the inputs from your side, I am going. VA sorry sir, VA 26.8 रहेगा. नहीं अभी ठीक है, इतना वैल्यू ले लेंगे. Let's see. Okay, I think this is correct because 5 meter पे है, and if you do the calculation, you will get somewhere around this one. Or let me check in my book. So the answers are 80, right? 26.67 and 33.33 are absolutely correct. So those who got these answers are correct. Okay, fine. So now let's continue with the problem. Now tell me, what is the next step to do? Yes, anyone else? What is the next step to do?
अभी क्या करेंगे? shear force कैलकुलेट करेंगे फिर। shear force. ओके चलो, तो अभी मैं क्या लिखता हूँ, ये दोनों का हमने दो इक्विवेलेंट फोर्सेस निकाले ना, कौन से थे वो? एक था कितना 2.5 मीटर पे, राइट? So let me draw that. ठीक है, एक मैं 2.5 मीटर पे ड्रॉ करता हूँ, जो यूडीएल का था। कितना होगा वो? 8 × 5 40, बराबर ना? और दूसरा जो था वो कितना? हाफ इंटू 20. हाँ, तो वो कहाँ पे एक्ट करेगा? कितने डिस्टेंस पे? 3.3. 3.3 मीटर पे। 3.3 मीटर पे फ्रॉम दिस एंड, तो ये एंड से कितना? 1.67. 1.7 ना? अच्छा, Yes. 3.33 बोल रहे थे क्या? 33 था, हाँ. तो 1.67, ठीक है, it is fine, and the value is 20 kilonewton. Am I correct, right? This is correct now? Yes. This is 2.5 meter for this particular load. Okay, good. So let's go for shear force calculation. Okay, shear force calculation. Now tell me, shear force calculation में सबसे पहला क्या? कौन से points पे? Do we have any points other than A and B? No, we don't have any other point other than A and B. हमें A और B में ही पता करना है, तो therefore at point A we'll have two sections, right? Shear force, first section 0, second section you will have to consider the reaction at A, which is 26.67 kilonewton upward. Now we'll go for at point B. What is shear force at point B? We'll take at first section, कितना आएगा? अगर मैंने पहला सेक्शन लिया, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं चेक करता हूँ, तो आएगा 26.67 माइनस 40 और माइनस 20, कितना आएगा? वो आएगा माइनस 33.33। एंड अगर तुमने राइट हैंड साइड चेक किया तो वो जीरो आने वाला है, बिकॉज ये माइनस 33.33 में पॉजिटिव 33.33 ऐड होगा और जीरो आएगा। ये समझा सबको कैसे लिखा मैंने? 26 वाला ये लोड, देन माइनस 40 माइनस 20, बिकॉज मैं सेक्शन यहाँ पे लूंगा ना लेफ्ट साइड पे, जस्ट लेफ्ट साइड पे, और एक जस्ट राइट साइड पे। तो लेफ्ट साइड के लेफ्ट में अगर मैंने देखा ये फर्स्ट सेक्शन, ये सेकंड सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन के लेफ्ट में देखा तो तीन फोर्सेस है, दैट इज आई हैव एडेड दिस वे एंड डन दिस। ओके, हाँ, सो हाउ टू ड्रॉ दिस नाउ? How to draw this? Hello, sir. I was having one doubt. Yes, go ahead. We can change our sides, like over B point we were taking on left hand side, then we took on right hand side to take 0 for SF2. Why not? Why not? It's okay. No? Are we doing any unless and until you are making any mistake in sign conventions, it is absolutely fine to change your sides. Okay, sir. Absolutely fine. Nobody is going to ask you कि why you have taken right hand side equation in between. पहले तो left से लिख रहा था, अभी right side का क्यों लिखा है? There is nothing questionable here, unless you are making some mistakes. Okay. See. Yes. हाँ, तो अभी बताओ. Yes. सर ट्रेपेजियम बनेगा ना? I'm asking you. Okay. Who's this? Let me check. अक्षता की सर. Akshata, हाँ, Akshata, tell me what do I need to do it? I'll be plotting first point. Let's say ये 0 था. What is the next point? Is 26.67. हाँ, 26 पॉइंट. मेरा 26.67. And B पे कितना है? इधर माइनस माइनस है वो तो. हाँ, अभी क्या बनेगा? ट्रेपेजॉइड? नहीं सर, इंक्लाइंड लाइन बनेगा ना उधर से, तो फिर पहले कैसे इंक्लाइंड बना था? Should I draw an inclined line or should I draw a curve? इंटरेस्टिंग. कर्व बनेगा सर. Okay, how many are saying curve? सर BMD में कब बनता है ना? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है BMD में कब बनता है. It's not that way. I told you one thing कि always SFD is 1 degree higher. Okay, मतलब मैंने कैसे बताया था तुम्हें? एक चीज याद रखो, अभी मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ. I have a sequence like this: a loading diagram, a shear force diagram, and a bending moment diagram. बराबर? लोडिंग डायग्राम को जब तुम इंटीग्रेट करते हो तो तुम्हें shear force diagram मिलता है. shear force diagram को इंटीग्रेट करते हो तो तुम्हें मिलता है bending moment diagram. bending moment diagram को डिफरेंशिएट करोगे तो you will get shear force. shear force को डिफरेंशिएट करोगे तो you will get load. Are you understanding? This is the sign. So tell me, अभी लोडिंग डायग्राम में तुम्हें वेरिएशन कैसे दिख रहा है? Is it a linear variation?
यस है ना, लीनियर लाइन है ना, ऐसा इंक्लाइन लाइन है ना, 8 से लेके 16 तक बढ़ रहा है ना वैल्यू, बराबर कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. So this is a linear equation of my shear force. Force is increasing linearly. If force is increasing linearly, what will happen to shear force? इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा? It will be a parabolic curve. Parabolic. इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा? It will be a cubical curve in the BMD. So I should now have a parabolic curve in the SFD and a cubical curve in the BMD. Okay? अभी क्वेश्चन है कि भाई पैराबोलिक कर्व तो ठीक है, मैं पैराबोलिक कर्व अभी ऐसा वाला बनाऊं या ऐसा वाला बनाऊं? Right? Now this is the question. How to deal with this? Because we don't have any other third point also. अभी मेरे पास कोई पॉइंट भी नहीं है कि जिसको मैं पकड़ के पता करूं कि भाई ये कौन सा टाइप का कर्व आएगा. पैराबोलिक है वो तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, बट नाउ how to draw this? Whether I should draw this kind of curve or this kind of increasing decreasing curve कैसे बनाएंगे? Yes, anybody having any idea about this? स्ट्रेस कहाँ पे जीरो हो रहा है वो देखना है हमें. Stress? No. See here. As I told you, अभी मैंने आंसर बताया. हाँ, yes, somebody else. Okay, go ahead. सर मैं बोल रही थी जिससे हम लोग बेंडिंग निकाल के फिर ड्रॉ किया तो हम लोग ने मैक्सिमम बेंडिंग निकाल के फिर जो पॉइंट होगा फिर हम लोग प्लॉट कर सकते हैं But ना. maximum bending कहाँ पे आता है? Where the shear force diagram is zero, right? That is the only point. मुझे पता ही नहीं है ना. अच्छा, my name is Satish Singh today. Okay, I didn't name myself only. Sorry. Okay, fine. Tell me. Yeah. So once again, मैं एक हिंट मैंने दिया था, वापस एक बार देता हूँ. मैंने क्या बोला कि भाई ये जो इंक्लाइन लाइन था, ठीक है, उसको तुमने इंटीग्रेट करने के बाद तुम्हारा एसएफडी आएगा ना, बराबर. और एसएफडी को डिफरेंशिएट करने के बाद इंक्लाइन लाइन ऊपर का कर्व बनेगा. तो मुझे अभी ऐसा कर्व एसएफडी में बनाना है जिसको मैं अगर जिसका डेरिवेटिव निकालता हूँ तो मुझे ऊपर का कर्व मिलना चाहिए. कैसे, मतलब क्या करेंगे अभी? तो सी हियर आई विल ट्राई टू ड्रॉ, मतलब अभी मैं सपोज ऐसा कर्व बनाता हूँ और ऐसा कर्व बनाता हूँ. दोनों कर्व्स में क्या डिफरेंस है, लेट मी चेक. सो नाउ आई नो दैट कि एसएफडी में जो कर्व है उसका मैं अगर डिफरेंशिएट करूंगा, मतलब मैं स्लोप फाइंड करूंगा. स्लोप एंड डिफरेंशिएशन आर द सेम थिंग. इफ यू रिमेंबर एफ इज मैथमेटिक्स में y is equal to f of x जब होता है, and if they ask you to find out slope of the curve, what you do? You find dy by dx, right? Absolutely correct है ना ये? तुम स्लोप फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव भी करते हो ना. स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट dy by dx at that point. सिमिलर वे, तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो मतलब इसका स्लोप फाइंड करना पड़ेगा. स्लोप मतलब टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा. सपोज मेरा एसएफडी कर्व ऐसा होता तो अगर मैं ऐसा टेंजेंट बनाता, पहला टेंजेंट ऐसे आता, दूसरा टेंजेंट ऐसे आता, तीसरा टेंजेंट ऐसे आता. व्हाट इज हैपनिंग टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट? इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? Is it increasing or decreasing? I have drawn 3 tangents. First tangent, second tangent, third tangent. What is happening to the slope of tangent? Whether it is increasing or decreasing? Decreasing. Decreasing. Slope मतलब क्या होता है? tan थीटा ना. tan थीटा तो बढ़ रहा है ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो था एंगल, यहाँ पे एंगल बढ़ गया, इधर एंगल और बढ़ गया, राइट ना. एंड स्लोप मतलब नेगेटिव में बढ़ रहा है वो ठीक है, बट स्लोप बढ़ रहा है ना. राइट. वेयर एज व्हाट इज हैपनिंग टू दिस? यहाँ पे अगर मैं पहले पॉइंट पे टेंजेंट बनाता हूँ तो ऐसा आएगा, देन टेंजेंट ऐसा हो जाएगा, टेंजेंट ऐसा हो जाएगा, फाइनली टेंजेंट ऐसा हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्लिनेशन Decreasing. So this is a decreasing curve and this is increasing for us now, बराबर. So I should go for this one or this one? So I should go for this curve. Why? Because see here my inclination is increasing है ना. यहाँ पे 8 to 16 जा रहा है, मैं 16 से 18 जाता तो मैं ये वाला कर्व बनाता. 8 to 16 जा रहा है तो ये वाला बनाऊंगा. Are you understanding my point? You have to now identify कि whether your slope is going to increase for the curve or decrease. If your slope is going to increase, then you have to check whether the loading diagram increases or not. If loading diagram says increase, then you should draw a curve with increasing slope. If loading diagram shows decrease, then you should draw a curve with decreasing slope. Understood? Understood or not? So Yes, sir. let me remove this and let's go for another case. So now I am very sure कि ये कर्व मुझे ऐसा बनाना है. Sorry.
पहले बना लेता हूँ फिर देखता हूँ. Let's say this is minus 33.33. Okay, and then it will be joined up to here and यहाँ से ऊपर. So we have drawn the curve, right? Now it intersects somewhere on the axis, and that point the shear force is 0. So this point is of our interest now. Why it is of our interest? Why? Because the bending moment can be maximum at that point. Now can you find out the location of point P? Can you find out the location of point P? Yes or no? Yes, sir. By which method? So here, finding out the location of point P is not that easy as we have done in the earlier case. Can you tell me why? Because I don't have triangles here. Do I have any triangles here? No, I have a curve there. तो ये curve को मैं similar curves क्या ऐसे कुछ equations नहीं होता, right? Are you understanding my point? समझ में आ रहा है क्या सबको? क्या बोल रहा हूँ मैं अभी? एक triangles नहीं है ना? Triangles नहीं है तो मैं वो ratios नहीं लिख सकता कि 26.67 divided by x equal to 33.33 divided by 5 minus x. Can I write down it? No, absolutely incorrect होगा वो. So I need to find out some other way to find out that location of point P. And once I find out that location of point P, then I'll have to go for BMD at point P. Because BMD at A and BMD at B is going to be 0. That I know कि A point B point पे bending moment 0 आता है. The maximum bending moment is going to be at point P only, and वही तो हमें find करना है. तो उसके लिए अभी मैं location of point P find करना चाहता हूँ. अभी ये point P का location find करने के लिए क्या करता हूँ मैं? देखो, मैं point P जहाँ पे भी आएगा उसका location मैंने x assume किया है, उसको मैं ऊपर loading diagram में project कर रहा हूँ. किया project? अगर loading diagram में उसको project किया तो loading diagram अभी divide हो गया. Loading diagram क्या हुआ? Divide हुआ. So let me draw the new loading diagram which is in the divided shape. For example, now my loading diagram will be like this. Okay, this is my section P and मेरा loading diagram अभी ऐसा है कि point A पे ये इतना UDL है, point P पे इतना है. ठीक है, this is the loading diagram. And इसका इतना जो part है आगे का, that is now we are ignoring. Are you understanding? This is how much? This distance is x. And now let us, ये height कितना है पता है सबको? 16. ये height कितना है? 8. बराबर ना? बराबर कि नहीं? Yes sir, बराबर. अभी मैंने ट्रायंगल को ज्वाइन कर दिया. देखो मेरा एक ट्रायंगल मिला है. हाँ, अभी यहाँ पे हाइट 16 होगा क्या? ये जो पॉइंट P है उधर जो लोकेशन है यहाँ पे कुछ अलग हाइट होगा ना? Let us assume that intensity as W. I don't know. So intensity यहाँ पे कितना है? W है. इधर कितना था? 16 था. इधर कितना है? 8 है. और इधर कितना है? 0. मतलब अगर ऐसे पूरा ट्रायंगल देखा तो ओके. तो अभी क्या करेंगे? बट ये सब पैरेलल है एक दूसरे को, तो वी कैन राइट डाउन दैट वे कि 8 and this distance is how much? 5 minus x. I can get this value of W. What is the intensity at this location? Are you understanding my point? What is the intensity at this location? How will I find out that value? तो देखो अभी मुझे वो ट्रेपेजॉइड का मतलब अभी मैं जब पॉइंट P पे सेक्शन ले रहा हूँ तो पॉइंट P के सेक्शन के बाद जो मेरे पास बीम बचा ना, फॉरगेट अबाउट द रिमेनिंग बीम, ये पूरा जो डॉटेड वाला बीम है उसको फर्क भूल जाओ. उसके पहले भी ट्रेपेजॉइड ही बचा. अभी वो ट्रेपेजॉइड को भी तो सॉल्व करना पड़ेगा ना. अभी ट्रेपेजॉइड को सॉल्व करने के लिए उसका इंटेंसिटी मैक्सिमम कितना है वो पता होना चाहिए. अरे अंडरस्टैंड, ये W पता होना जरूरी है. इट इज नॉट 16 नाउ. So I need to get that value, right? Just a minute. Okay, so I have this one. So let us now calculate the intensity W, which is of the UDL, जो UVL sorry. तो उसके लिए मैं कैसे इक्वेशन लिखूंगा? तो देखो, okay. So now how to write down the equation for W? So that is why मैंने उसके लिए triangles में divide कर दिया है. Now I have this as the base
and I have W for here. So ये ऐसा है. कहाँ पे गया है? Just a minute. हाँ. ये पॉइंट पे W है, ये पॉइंट पे 16 वैल्यू है, ये पॉइंट पे 8 है और यहाँ पे 0 है. And the distances which we know is of this is x and this is 5 minus x. Okay. So can you tell me any relation between this 8, 16 W and 8x? How to get the value of W in terms of x? Can you tell me any equation on similar triangles now? Anyone? Yes. In the Tushar, triangle, Akshata, anyone from your side? yes, in the triangle, we can consider the triangle OWP and O16 and that one. Okay. Actually, it is not named. So the point after P. But I don't know this distance. हाँ, ये मुझे पता नहीं कितना है. So sir, we can just let it assume it to be something. We don't confirm the needing ability. Okay. Because the factors is common in both the sides, so we can later, if possible, calculation we can cancel it out. Okay. So we would be using the similar triangle theory because two sides are the one angle is same, and just a minute, and yes sir. Okay. Rather, we can do this way also. There is one property of triangle. When the triangles are similar, this base side upon this side is going to be adjacent side upon the complete side. मतलब ये भी उसके proportions में होता है. ठीक है. मतलब ये पूरा जो triangle है उसको ये जो part divide करता है ना, तो the segments are also in proportion. Means I can simply write down कि 8 by W, or else W by 8 लिखता हूँ उल्टा. W by 8 W by 8 is equals to 16 by W. 16, W by 8. No, that is not 16 by W. नहीं. It will be in terms of x. Of course. Yes, that is also correct. 16 by W by 8. That is equal to 16 by. No. नहीं sir, वो actually दो triangle consider. I need to वो triangle लेना ही पड़ेगा. Just a minute. Yeah. हाँ बोलो. Akshata was something saying. One else. मतलब किसी का आवाज सुना मैंने. I don't know who was that. Akshata sir. Yeah, yes, go ahead. तो कॉर्नर का पॉइंट का नाम क्या ओ है क्या वो? कुछ भी लो. O, A, B, C, D, whatever. I was saying कि अगर W by 8 ले रहे हैं तो x by जो छोटा डिस्टेंस है वो लेना पड़ेगा ना? W by 8 ले रहे हैं तो x by छोटा डिस्टेंस. हाँ. तो B से लेके वो ट्रायंगल के लिए वैसा लेना पड़ेगा. W by 8 के लिए मुझे छोटा by x लेना पड़ेगा. हाँ. Any other way to do it? सर इसमें पहले ये OB जो छोटा ट्रायंगल एक्स्ट्रा एडेड ट्रायंगल है ना, वाला ट्रायंगल, और फिर O16 बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, उससे अपने को ना इधर एक्सटेंडेड हाइट मिलेगा. सो एक्सटेंडेड लेंथ मिलेगा. उसके बाद फिर एक्सटेंड ये OWP और OB कौन सा भी ट्रायंगल लेके मतलब वो फिर x का वैल्यू मिल जाएगा. ओके यू कैन डू दैट वे. या फिर एक सिंपल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, तो वी कैन राइट डाउन द स्लोप पॉइंट स्लोप इक्वेशन आल्सो. इक्वेशन ऑफ स्लोप लाइक हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, W minus 8 upon this height minus x is equal to 16 minus W upon 5 minus x. Right? Understood? क्या लिखा मैंने? Interpolation equation. If you have used in thermodynamics में अभी यूज करोगे कभी कभी, ये वही सेम है. तुम जैसे लिख सकते हो, that is proportion. I can take W minus 8 this height difference upon this difference as x is equal to W 16 minus W upon this as 5 minus x. You can do that way and give me the tell me the value of W in terms of x. Here of course we are not going to get the value of W. We need to get the value of x. सर W minus 8 लिया वहां तक ठीक है, बट अगर हम नीचे वाला जो पॉइंट ले रहे हैं ना जहाँ पे आपने x लिखा है, सर वो भी तो डिफरेंस ही लिया ना मैंने. सर वो x minus x1 होता है ना सर. हाँ तो वही है ना, एक्चुअल मतलब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस x है ना, डिफरेंस x ही है ना. अच्छा ठीक है. हाँ यस सर.
वही डिफरेंस लिखा है ना, इसलिए ऐसे लिखा मैंने, बराबर। हाँ, नाउ डू इट एंड गिव मी द वैल्यू ऑफ w इन टर्म्स ऑफ x। सर आपने जो राइट हैंड साइड में लिखा है 16 माइनस डब्ल्यू अपॉन 5 माइनस एक्स, उससे अच्छा हम 16 माइनस 8 अपॉन सीधा 5 लिख देते ना, वो भी तो सेम स्लोप है। वो भी चलेगा, 16 माइनस ज्यादा 8 इजी हो अपॉन जाएगा 5 कितना हो जाएगा फिर? ज्यादा 8/5। तो w माइनस 8, आई एम नॉट मतलब ये as if as far मतलब as per convenience you can write down, it's not that way कि कैसे भी लिखो। 16 माइनस 8 कितना होता है? 8/5, बराबर ना? हाँ। So w minus 8 is equal to 8/5, सर उल्टा लिखा मैंने, स्ट्रेट लाइन 8/5 इक्वेशन आएगी, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल x, नहीं लीनियर इक्वेशन ही आएगा। आई वांट w इन टर्म्स ऑफ x, एंड अगर ये -8 को उधर भेज दिया तो +8 हो जाएगा, राइट? यस सर, 8/5 plus x, बराबर ना? यस सर, this is also correct. You can write down anyway the way you want. फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम ये लिख सकते हो, इससे भी यही इक्वेशन आता है अल्टीमेटली, ओनली w के साथ मल्टीप्लिकेशन होता। सो यू कैन टेक दिस एंड दिस रेशियो। ओके, दिस इज बेसिकली स्लोप पॉइंट इक्वेशन और इंटरपोलेशन फॉर्मेशन, इंटरपोलेशन फॉर्म, ठीक है? तो यू कैन राइट डाउन एनीवे। अभी ये लिखा तो यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये 8/5 होता है 1.6। तो मेरा w ये वैल्यू है, मतलब मेरा इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी ये है। अंडरस्टूड दिस? इतना पार्ट समझ में आया क्या? ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, as I have very little space remaining, मैं यही सब चीज है ना w का यहाँ पे लिखने वाला हूँ शॉर्ट में, because I am going to erase that part. I have two things to be done on the same slide. So see here, what I'm writing, w minus 8 divided by x, and directly वो लिखता हूँ 16 minus 8 divided by 5 minus x, and when we simplify this we get w as how much? 1.6 x plus 8. Okay, now I will erase this one because I need this space. Okay, so now see here, मैंने क्या किया, w का वैल्यू फाइंड किया। Why w I am calculating? Because I want to find out the location x, मुझे बहुत important है to find out location x, ठीक है? So how to find out x then? तो देखो अभी, let us now change the color and go to the equivalent of this. So now once you know this w, can you find the equivalent load? Can you find the equivalent load? ये 8 है, ठीक है? उसका इक्विवेलेंट लोड कितना आएगा? उसका आएगा 8x, एंड इट विल एक्ट एट x/2, राइट है, बराबर? और ये ट्रायंगल का इक्विवेलेंट लोड कितना आएगा? कैन यू टेल मी द ट्रायंगल का इक्विवेलेंट लोड? वापस से मैं लिख रहा हूँ, देखो चाहिए तो मैं इधर वापस से बड़ा बना सकता हूँ, थोड़ा क्लमजी हो गया वहां पे। आई हैव ट्रायंगल, ऐसा ट्रेपेजॉइड मुझे मिला है, बराबर? ये वैल्यू 8 है, ये है 1.6x plus 8, बराबर? w के बदले मैंने वो वैल्यू लिखा। अभी मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, दिस इज 1 which is 8x and it is acting at x/2, राइट? एंड ये ट्रायंगल जो बचता है, ये इसका हाइट कितना रहेगा? इसका हाइट रहेगा 1.6x। देखो ये 8 माइनस करेंगे ना हम, बराबर? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? हाफ इंटू 0.8x square 1.6x, तो 0.8x स्क्वायर आएगा, बराबर? 0.8x स्क्वायर आएगा, एंड कहाँ पे एक्ट करेगा वो? इट विल एक्ट एट x/3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? लिटिल कंफ्यूजिंग, वंस अगेन इफ यू वांट आई कैन ड्रॉ, एब्सोल्युटली फाइन। बार फटाफट हम पद्धत से जाऊं तो बिल बनाए दो फोफो खाली कौन के नाम मनपसंद ध्यान चालू कर પેલા પર લડકા ખબર ચાવી ફરે છે નવા જા कार्य आमिर म्यूट, आमिर किया, उसको म्यूट ही किया। ओके, सी हियर, हैव यू अंडरस्टूड इट? इसको डायरेक्टली लिखो क्या 0.8x स्क्वायर कैसे आया? और एनीबॉडी वांट्स टू रिपीट इट? सर रिपीट करो, एक डायग्राम रिपीट कर ही देता हूँ। सर रिपीट कर दो। हाँ, मुझे लग रहा है कि देयर इज नो रिस्पांस। ओके फाइन, सी हियर, इतना तो समझ में आया ना ये कैसे किया था, w कैसे निकाला था? तो अभी मेरे को पॉइंट P के बाद मुझे इतना एरिया मिला है। देखो पॉइंट P के बाद ये 8 है और ऐसा कुछ ट्रेपेजॉइड मिला है, ये है मेरा सेक्शन PP। ये मेरा पॉइंट P है, ये सेक्शन है मेरा, बराबर? ये 8 है और ये w था, w को लिख सकता हूँ 1.6x plus 8, बराबर? बराबर ना? हाँ, अभी मैं क्या करूंगा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, एक यूडीएल एक यूवीएल। ये डिस्टेंस टोटल कितना था x, तो ये जो यूडीएल आएगा
यूडीएल आएगा, उसका इक्विवेलेंट कितना आएगा यूडीएल का? यूडीएल का इक्विवेलेंट एग्जैक्टली सेंटर में आएगा ऐसा, उसका वैल्यू रहेगा 8x एंड वो कहां पे एक्ट करेगा? x/2 पे, बराबर? अंडरस्टूड दिस मच पार्ट? यूवीएल जो है यूवीएल, ये यूवीएल उसका इक्विवेलेंट इधर आएगा, उसका इक्विवेलेंट क्या रहेगा? अभी देखो ये अगर 8 इसमें से ये 8 माइनस कर दिया मैंने तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा खाली 1.6x, ठीक है? तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? हाफ इंटू बेस इज x, हाइट इज ओनली 1.6x, तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये इट इज 0.8x स्क्वायर and it will act at what distance? x/3. Now have you understood? Yes or no? Yes, sir. Okay. And at point P के बाद यहाँ पे A पे और एक लोड है जो हमारा VA जो पहले से ही था 26.67, राइट? हाँ, समझा? अभी मैंने P वाला वापस से बना दिया बीम, पूरा बीम. Okay. Now tell me, अभी मैं क्या करना चाहता हूँ? To find out the value of x, what I can do? To find out the value of x, the simplest thing I can do is, I know that one thing. What I know is the shear force value at P. What is the shear force at P? 0. Right or wrong? Right. Right now. So can I write the equation shear force at P section is 0? But shear force होता क्या है? Shear force is a summation of vertical forces on the left hand side. तो अगर मैंने ये P सेक्शन के लेफ्ट साइड पे चेक किया, कितने फोर्सेस है? 3 फोर्सेस है. एक है 26.67, एक ये रेड वाला 8x और ये ब्लू वाला 0.8x स्क्वायर, राइट? सो कैन आई राइट डाउन द 26.67 minus 8x minus 0.8x square equal to 0. Is it correct? Right now, because it has to be equal to 0. Otherwise shear force 0 नहीं आएगा P पे. तो अगर ये 0 है, can you give me the values of x now? You have the calculator, solve this quadratic to give the value of x. There will be two values, one will be absurd, negative आएगा शायद से, and एक positive आएगा. Sir, x positive है 2.63 and negative है -12.6. Negative we cannot take because x is the distance and distance cannot be negative. So 2.63 meter is my answer, right? X. So I got the location 2.63. So ये distance कितना है? 2.63. ठीक है? तो x का वैल्यू तुम्हें मिल चुका है. Now can you calculate bending moment at P point P? बेंडिंग मोमेंट के लिए उसके ये सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने फोर्सेस है? 3 फोर्सेस है. एक है, पहला फोर्स है 26.67. टेल मी द डिस्टेंस ऑफ 26.67 फ्रॉम पॉइंट P. कितना डिस्टेंस है वो? x है ना? 26.67 का डिस्टेंस कितना है पॉइंट P से? देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, कितना x है और x का वैल्यू कितना है? 2.63. उसके बाद 8x वाला, इसका मोमेंट नेगेटिव आएगा तो -8 इंटू x का वैल्यू डाल देता हूँ 2.63 इंटू उसका डिस्टेंस कितना है? 8x का डिस्टेंस कितना है? x/2. तो कैन आई राइट डाउन 2.63/2 माइनस और कौन सा फोर्स बचा? 0.8x स्क्वायर. ठीक है, 0.8x स्क्वायर, बट x स्क्वायर का वैल्यू डाल सकते हैं ना हम लोग. 0.8 इंटू x स्क्वायर विच इज 2.63 का स्क्वायर सॉरी इंटू उसका डिस्टेंस कितना है? उसका डिस्टेंस है ये x/3 जो कि 2.63/3 है. Now can you calculate the bending moment at P? So last वाला फोर्स क्यों लिया? कौन सा? 0.8 वाला? हाँ, लास्ट. वो क्यों नहीं लेंगे? सेक्शन किधर है मेरा? ये है ना सेक्शन, राइट ना? यस सर, यस सर. तो उसके लेफ्ट में 3 फोर्सेस है ना, एक ये, दिस इज फर्स्ट फोर्स, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड. ओह यस, ठीक है. ओके, यस सर. now tell me the value. How much it is? कितना आया? Let
Let me check in my. I am getting 37.6. 37.62 here. Good. And even I'm getting the same one, 37.6. 62 kilo Newton meter. So can I draw this point P? हमने already plot किया था. ये है मेरा point P. उस पे value कितना है? 37. 37.62. And बाकी A और B पे तो 0 होगा because they are endpoints. Yes. So which type of curve I will draw? I will draw Parabol. the curve. And now this is not a parabolic. This is a cubical curve. So that is why it is important to note down. मतलब तुम वहाँ पे arrow करके ऐसा क्यों लिख रहे हो? Because अभी ये curve तो हम random draw कर रहे हैं. So we do mention कि degree इसका क्या होने वाला है? Second degree है. This is the third degree curve. That's a cubical curve. Okay. Understanding it? Have you understood? Now these are the problems which they will be asking you in exam based on trapezoid or UDL and UVL का combination. So how to deal with this kind of problems? You need to understand this. Uniformly varying load में कैसे काम करते हैं? You understood this? Any doubt? No, sir. So here what changes is to find out the location of point P. That is not an easy task here. Why? Because we need to find out the shear force and we need to equate it 0 and then you get X. But in case of UDL, when the only UDL is there, this particular part becomes very easy. Use the similar triangle method and do it. But when it is UVL, you have to use similar triangle also. That is for calculating the highest maximum intensity of UVL. And then again, you'll have to write down the shear force equation, equate it to 0 to get the value of X. Once you get the value of X, you have to again calculate the bending moment. Now this was simple problem. Why? I'm saying why simple? Because there was only 2 points and the only third point was point P. But along with this P, अगर C, D, E ऐसे वही points आते हैं, and if that वो UVL आता है, so your work is going to add, and then the question becomes quite lengthy. But once you have enough practice, then taking the sections and everything, that point you can minimize, and you can switch on to left and right side and write down the minimum equation, minimum possible equation to minimize your time. But avoid mistakes. If you do some mistake, then it will be wrong. Okay. Any doubt till now? I will go for one more numerical. Now the second numerical I'll be which I'll be giving. Okay, so that is a simple one. Let's see how you can do. I will not interrupt much. You'll have to do on your own. Okay, Madam, you will have to support me while I'm doing it. Okay, I need to add some slide. Wait a minute. Okay, so let us now go to the next question. Question number 9, 2.7. Yeah. Now we have a simple beam, continuous beam like this. Okay. Let's say this is point A, point B, and point C. Okay. Now from point A. Okay. So there are. Wait a minute. Reaction at A, reaction at B, and reaction at C. There will be 3 reactions. So VA, VB, and VC. Now there is a continuous UDL. There is a continuous UDL of intensity 15 kilonewton per meter. And the span of AB is 6 meter, whereas span of BC is 2 meter. Span of AB is 6 meter and span of BC is 2 meter.
Okay. Yeah. So now can you solve this? Yes. Sir, add B, is it a support or a force? It's a Define support. yeah. Okay. But the problem here is to find out the support reactions. We have only 2 equations and there are 3 unknowns. Right, na? Then Sir, just a question that the 15 kilonewton per meter दिया हुआ है ना वो VB का amount है या फिर overall इसका amount है? no, 3 no, supports VB हैं का amount and नहीं है. uniformly divided load है. Yes, yes, yes. Okay. Uniformly distributed load. Okay, we can make this simple. This is a type of overhand being and distributed over the length. Okay. Fine. So movement, anyone count के Or बाद else allow we can, yes, yes, somebody else. anyone count के अगर सर movement निकालेंगे तो हम लोग को We can take the moment. We can take the moment at any point. For example, see here. Abhi, I can take moment at A, but I'll get an equation between B and C. Okay. Now this is a continuous beam. Let us make this particular beam in such a way that the B as ये B को निकाल देते हैं. I am changing the problem. Simple problem था, but इसको अभी थोड़ा change करता हूँ मैं. मेरा support जो है वो इधर लाता हूँ B को. This is 4 meter. Some addition I am doing. 2 meter, 2 meter, and this point B is an internal hinge. Acha, have you solved internal hinge problems in mechanics? No, have you solved it or not? No, the sir. problem based on internal hinges. No. Yes. No, sir. No. अरे हाँ मतलब I am not getting. What are you saying? No, sir. There is not हमने any problem on internal hinges. नहीं If सर not, सॉल्व then नहीं I'll किया have कभी. to. Yes, yes, yes. No sir, we haven't solved any question. Okay. So it was not there in your curriculum में नहीं था क्या? Fine then. Let me do. So we will reserve this particular problem for the next time. I'll have to go for internal hinges first, and that right now we don't have that much time. So let's go to the next problem. Let us go to the next problem. I will give you a simple problem and how to do it. So let me stop again and it 2.7 problem 2.7. We are going to solve it, but in the next class. But by that time, we can solve a simplest problem which you all can do. Sharing. Yes. Yeah. So I'm taking a very simple problem then. Okay. So now right now we understood the UVL wala part. So based on that, another similar type of problem can be solved, which is a cantilever with UVL. I have a cantilever beam which is having a uniform varying load of this kind. The length is, let's say, 6 meter span. Okay. And this is also 6 kilonewton per meter. Okay. This is point A and this is point B. Now can you solve this problem? ये तो simple हो गया, right? Yes or no? So can you quickly give me the values for support reaction पे क्या क्या आएगा?
सपोर्ट में है there will be vertical reaction and the moment. We have already discussed this part. ऐसा टाइप का हमने कैंटिलीवर पे एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था. सपोर्ट रिएक्शन में एक वर्टिकल रिएक्शन एक मोमेंट आता है, राइट? या तो आई एम सॉल्विंग सपोर्ट रिएक्शंस आल्सो. Okay, so I know that there will be one vertical reaction VA and there will be one moment. I am assuming it is anti-clockwise. Let's say MA or M बोलता हूँ मैं खाली moment M. Okay. Now there will be equivalent load. Equivalent कितना आएगा इसका triangle का? 18 kilonewton and acting at 4 from this is 2 meter. 2. And This is 2 meter. 4 meter. Okay. So we have written this way. So now, summation of moment about A point is 0. So we have only one moment at A, which is M, and दूसरे का moment कितना आएगा? minus 18 into 4, right? Equal to 0. So you get M as 72 kilonewton meter. So you got the value of M. I will write down the value as 72 kilonewton meter. Okay, then summation of forces in y direction is 0. So you will get VA upward minus 18 downward. So VA कितना आएगा? 18 kilonewton. This is how we can do that. ये भी सिंपल था. हाँ, अभी क्या करते हैं हम लोग? shear force calculation कर लेते हैं पहले. Yes, how will you do shear force calculation? You will write down at point A. You will take shear force at one section. पहला section 0 आएगा. Shear force you will take at the second section. Second section पे कितना आएगा? VA 18. हमने वैल्यू निकाला है 18 किलोन्यूटन का, तो वो मिलेगा 18. तो प्लस 18 किलोन्यूटन. ओके, एट पॉइंट बी अगेन विल टेक टू सेक्शंस. वन साइड पे अगर देखेंगे, अगर मैंने बी पे एक ही सेक्शन लेना पड़ेगा, वहां पे दो सेक्शंस की जरूरत नहीं है, राइट ना? जरूरत है क्या दो सेक्शन की? नहीं है, बिकॉज वो दो सेक्शन वहां पे पॉइंट लोड नहीं है, तो सिंपली वो 0 आने वाला है, बिकॉज इट्स द लास्ट पॉइंट. तुम उसको करोगे तो प्लस 18 माइनस 18 भी 0 आएगा, या फिर राइट में देखोगे तो भी 0 है. So therefore I am getting 0. So how will I draw this particular graph then? तो पहला A point और खाली B point. A point पे 0, A point पे पहला 0, the next is plus 18, then we have it is 0. So how will I draw? अब ये inclined line तो नहीं बनेगा ना, यहाँ पे भी curve बनाना पड़ेगा. तो which type of curve I will draw? Upper curve. Increasing. Yes. फर्स्ट डिग्री कर्व बनेगा सर, पर है ना जो एट 4 मीटर वाला डिस्टेंस है ना, वहाँ पे हाईएस्ट पीक होगा उस कर्व का. shear force है रे ये. सॉरी सर, कॉन्वेक्स कर्व बनेगा. कॉन्वेक्स कर्व. हाँ. So we'll get this kind of curve or this kind of curve. इस स्लोप के साथ क्या हो रहा है? साइड वाला. फर्स्ट वाला सर, जो फर्स्ट ड्रॉ किया वाला बढ़ते जा रहा है ना, स्लोप रहेगा ना. हाँ राइट. सर स्लोप इंक्रीज हो रहा है ना, इसलिए पैराबोलिक कर्व डन. सेकंड, अभी क्या करेंगे? बेंडिंग मोमेंट. बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें पता है कि बेंडिंग मोमेंट के लिए दो सेक्शंस लेने पड़ते हैं. तो बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें बेंडिंग मोमेंट सॉरी उल्टा लिखा मैंने. बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन. Bending moment at point 1, that is at point A 0, and bending moment at second section. ये समझ रहा मैंने दो क्यों लिया यहाँ पे? बिकॉज मुझे यहाँ पे दो सेक्शंस लेने पड़ेंगे. बिकॉज आई हैव अ मोमेंट ओवर देयर. इसके लिए 0 आएगा, बट इसके लिए ये मोमेंट कंसीडर करूंगा. ये मोमेंट है माइनस में, बिकॉज ये नेगेटिव है. सो देयरफॉर माइनस 72 किलोन्यूटन मीटर. ओके, देन इफ आई टेक बेंडिंग मोमेंट एट द लास्ट पॉइंट, इट वुड बी 0. तो इफ आई ड्रॉ द BMD कर्व, एक है ये, दूसरा आएगा माइनस 72 एंड तीसरा यहाँ पे 0. अभी कैसे मिलेगा? Now which curve? Of course it will be again an increasing curve, because ये नेगेटिव में है, तो देखो इसका स्लोप नेगेटिव में बढ़ते जा रहा है. It will be like this. See here.
right? So getting this, how to draw the curves for simplest one. Sometimes what happens, many of the times this kind of questions they will ask you in very short type, where 4 to 5 marks, which not much variation is given. Only you have to find out the cubical curve or the nature of the curves, or else. Now in the next class we will be doing more about trapezoidal varial load and the reverse way of the problems. Reverse way means what? Here the SFD and BMD, or else SFD will be given to us. You have to draw the BMD as well as loading diagram. You have to predict the loading diagram, or else if the BMD is given, you predict the SFD and predict the loading diagram. The reverse way we will be doing it. Okay. Then we will also solve 1 or 2 complex problems, and that is enough with this SFD BMD. Okay, because we are going to draw this SFD BMD in the further chapters also, when we will be solving for bending moment, bending stresses. So there also in those problems we need to draw the simple SFD and BMD. For that problem, we need to identify what is the bending moment for which we are designing. Okay, as I told you in the morning session. Have you understood this part? SFD BMD, as Yes, it carries a weightage of 25 to 30 marks in your exam. 25 minimum 35 marks, with option it is 30. So that is the total weightage of this SFD, and the first weightage is again 15-20 marks. So almost around 35 marks we have finished from your paper of 70 marks. 70 marks की paper है ना? 70 नहीं, 80 marks का paper शायद. So out of that we have completed this much portion. Then not completed, SFD we are will be doing it in the coming